Hello students, in previous video we have started the properties of solid and we have already discussed about the properties of cuboid and cube, and we have learned that a cuboid has 6 faces, 12 edges and 8 vertices. So what are faces? You can see here जो ये पूरा साइड दिख रही है आपको, इधर से the face. So it has 6 faces and edges means जहां पर 2 faces आपस में मिलते हैं, that is वहां पर एक line दिख रही है, you can see here, that is a edge. So it has 12 edges. You can count 1 2 3 4, similarly here 5 6 7 8, then 9 10 11 12. So there are 12 edges and 8 vertices. Vertices means corners, corner or vertex, and it has 8 vertices. So you can count 1 2 3 4 5 6 7 8. So it has 8 vertices and all the faces of cuboid are rectangles. You can see here the shape of the faces, all are rectangular in shape, and the opposite faces look alike. जो सामने के faces हैं वो कैसे हैं? एक जैसे, they looks alike. Now if we talk about the cube, so cube also have same number of faces, edges and vertices. Cube also has 6 faces, 12 edges and 8 vertices. The only difference between cube and a cuboid is that all the faces are square. इसके सारे faces कैसे हैं? Square. But the faces of cuboid are rectangular. Cuboid के faces rectangular shape के थे, but the faces of cube are square in shape because its length, breadth and height are of same length, right? And all the faces look alike. In case of cube, all the faces look alike. सारे faces कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं. But in case of cuboid, only the opposite faces are look alike, right? और cuboid में सिर्फ opposite faces like होते हैं, but in case of cube, all the faces look alike. Now today we will learn the properties of the other solid shapes, that is cylinder, cone and sphere. So let us learn about them. First of all, cylinder. So I have this glue stick which has cylinder shape, right? So let us count the number of edges in this cylinder. So here you can see here there are one curved surface. इसका ये curved surface है, you can see here. यहाँ पर आपका top में आपका one plane surface, and here also you have one plane surface. So there are 2 plane surfaces and 1 curved surface. Now if we talk about the edges, so how many edges are there? Here is one edge, यहाँ पर एक one edge है और यहाँ पर second edge है. So there are 2 edges. Now do you see any corner or vertex in cylinder? No, there is no vertex, no corners. So you can see here in the picture also. So a cylinder has 2 edges, एक top में है और एक bottom में है. 2 edges are there, right? There is no corner, कोई corner नहीं है, and it has 2 plane surfaces, एक top में है और एक bottom में. 2 plane surfaces and 1 curved surface. 1 curved surface. So you have to learn these things.
जो ये प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड्स की, डिफरेंट शेप्स की, इनकी आपको प्रॉपर्टीज लर्न करनी है, उनके एजेस, कॉर्नर्स, फेसेस, सरफेसेस, दैट यू हैव टू लर्न. Next solid shape is your cone. Now cone has one edge, one vertex. You can see here one vertex top में and one edge. यहाँ पर ये edge हो गई आपकी one. यहाँ पर two surfaces जो आपके जहाँ पर मिल रहे हैं वहाँ पर आपकी क्या बन जाती है edge. So there is only one edge because it has two surfaces and one is curved surface, one is plane. So I have made one cone for you. You can see here this is a vertex and this is a curved surface. ये कैसा है? Curved surface है. And here is the plane surface. You can see here this is the plane surface and this is the edge. जहाँ पर ये दोनों surface आपस में मिलते हैं यहाँ पर क्या बन जाता है? Edge. So there is one edge, one vertex, one curved surface and one plane surface. So सारे क्या हैं? 1 1 है यहाँ पर, right? And if we talk about the sphere, so sphere has no edge, कोई edge नहीं है. Why? Because there is only one surface. ये पूरा का पूरा one surface होता है इसका. जब one ही surface है तो edge कैसे हो सकती है? Edge तो तब बनती है जब two surfaces या faces आपस में जहां ज्वाइन होते हैं वहां पर क्या बनता है? edge बनती है. बट इसमें कितने surface है? Only one surface and there is no corner. So you can see here this is a sphere. So इसमें क्या है? There is no vertex, no edge, only one surface, that is curved surface, right? So a sphere has no edge, no corner, it has one curved surface. Now what you have to do? You have to learn these properties of solids, right? आपको ये learn होने चाहिए. Number of faces, edges or vertices, surfaces, which type of surface is there, कितने surfaces है, that all things you have to learn. Now based on it we have worksheet number 2 and here we have fill in the blanks. So this worksheet is totally based on the properties of solids जो हमने अभी discuss किए. So you have to learn it. Now let us discuss these fill-ups. A cylinder has dash edges. So if we talk about the cylinder, how many surfaces it has? कितने surfaces थे इस cylinder में? 1, ये 1 पूरा 1 surface, 2 and 3. How many surfaces are there? 3. But here we have to write how many edges. So ये जो 3 surfaces हैं ये कितने edges बनाएंगे? 1 और ये second, ये दोनों surface जब मिल रहे हैं तो यहाँ पर 1 edge and यहाँ पर second edge. So how many edges are there? 2 edges. 2 edges are there. Cylinder has 2 edges. A cone has dash plane surface and dash curved surface. Now cone में कितने plane surface होते हैं और कितने curved surface होते हैं? So first of all, how many surfaces are there? You can see here the cone, right? This is a cone. Now how many surfaces it has? It has 2 surfaces. One this and another this one. यहाँ पर hollow है, but अगर यहाँ पर लगा दे तो ये एक one surface. Now there are 2 surfaces. How many plane surfaces are there? तो यहाँ पर कितना है? 1 plane surface and 1 curved surface. This is a curved surface. So you can see here a cone has 1 plane surface and 1 curved surface. Now a cuboid has dash edges and dash corners. ये मैं आपको दिखा के बता रहा हूँ, but you have to learn these. आपको learn होने चाहिए. A cuboid has, so cuboid के कितने
एजेस हैं और कितने कॉर्नर्स होते हैं? सो इफ यू टॉक अबाउट द एजेस, इट हैज 12 edges. How many edges? Cuboid has 12 edges and dash corners. Corners means vertices. So how many vertices are there? 8 vertices. And next is the shape of each face of a cube is. We have just learned that about the shape of each face of cube. क्यूब के फेसेस की कैसी शेप होती है? जो क्यूब के फेसेस होते हैं that are square in shape. कैसी होती है उनकी? स्क्वायर, राइट? एंड अगर हम क्यूबॉइड के एजेस, कॉर्नर्स एंड फेसेस की बात करते हैं, तो जो आपका रूम होता है, रूम के आप एजेस, कॉर्नर्स एंड फेसेस को काउंट कर लें तो वो भी, उससे भी आपको इनके एजेस, कॉर्नर्स एंड फेसेस पता लग सकते हैं. आप काउंट कर सकते हैं. अगर कोई आपका क्यूबॉइड शेप का रूम है प्रॉपर, तो आप उसके नंबर ऑफ एजेस, कॉर्नर्स एंड फेसेस काउंट करेंगे. तो 4 वॉल्स और एक रूफ हो गई आपकी और एक फ्लोर, तो आपके 6 फेसेस हो गए. इफ यू काउंट द कॉर्नर्स देन यू कैन इजीली काउंट कि आपके नीचे फ्लोर पे आपके 8 कॉर्नर्स हो जाएंगे और 4 फ्लोर पे हो जाएंगे कॉर्नर्स और 4 टॉप में रूफ में हो जाएंगे. सो 8 हो जाते हैं. सो इन दिस वे यू कैन काउंट देम और उनको लर्न भी कर सकते हैं. नाउ अ क्यूब हैज डैश फेसेस. सो अगर हम रूम की बात करें तो रूम की कितने फेसेस होते हैं? 4 वॉल्स, 1 फ्लोर और एक रूफ. सो कितने हो गए ये? 4 + 2 दैट इज 6. सो क्यूब के भी कितने हो गए? 6 फेसेस. तो इस तरह से भी आप लर्न कर सकते हैं. सो क्यूब और क्यूबॉइड के क्योंकि सेम होते हैं, नंबर ऑफ फेसेस, एजेस एंड कॉर्नर्स. नाउ डैश हैज dash faces of cuboid are identical. तो क्यूबॉइड के कौन से फेसेस आइडेंटिकल होते हैं? एक जैसे कौन से फेसेस होते हैं जो एक जैसे लगते हैं? सो ऑपोजिट, जो सामने के होते हैं, जो सामने के फेसेस होते हैं क्यूबॉइड के, दैट आर आइडेंटिकल. सो दैट इज ऑपोजिट फेसेस. Opposite faces of cuboid are identical. Next is a sphere has dash curved surface. So you have seen the sphere. It has only one surface, right? और वो भी कैसा होता है? Curved. So a sphere has one curved surface. A cone has dash edges. So we have just seen the cone. कितने उसके सरफेसेस थे? 2. और 2 सरफेसेस जहां मिलते हैं वहां पर क्या बनता है? एज. सो देयर इज ओनली 1 एज इन अ कोन. अ सिलेंडर हैज डैश प्लेन सरफेसेस. अब सिलेंडर के कितने प्लेन सरफेसेस होते हैं? वी हैव जस्ट सीन देयर आर 3 सरफेसेस आउट ऑफ विच 1 इज कर्व्ड. जो टॉप एंड बॉटम का होता है दैट आर प्लेन सरफेसेस. सो दैट इज देयर आर 2 प्लेन सरफेसेस. नेक्स्ट इज अ स्फीयर हैज डैश एजेस एंड डैश कॉर्नर्स. सो स्फीयर, दिस इज अ स्फीयर. डू यू सी एनी एज or any corner? No, there is no edge and no corner. So sphere has no edges and no corners. तो इसके कोई भी edge and कोई भी corner नहीं होता. So we have completed worksheet 2. In this worksheet there is only fill-ups and it is totally based on the properties of solids. So learn these properties of solids. These are very important. So
learn it. Thank you.